Hello student, today we study a new content, speed. And what is the meaning of speed? We already studied in your lower class 10th, 8th, 9th. So I write the definition of speed. Directly I write the definition of speed, that the rate of change of distance by an object is called speed. And mathematically distance traveled by the body in per unit time is called speed. That means, suppose a body travel a distance x time, x meter. Suppose a body travel x meter in t time. Suppose a body travel distance x meter in t time. Then, how much distance is traveled in unit time? That is x upon t. Because in t time the body cover a distance x, then in unit time the body cover a distance x upon t. And for unit time रे जो बॉडी टा कवर करूची जेते डिस्टेंस कवर करूची ताको ही हमें स्पीड कहबा. दैट मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम per unit time. T time, if the body travel x distance in t time, that means the body travel in t time by x distance, then per unit time the body travel x by t, and the body travel x by t is called speed. So distance upon time is speed. अब मन रखिबो speed is a scalar quantity because it has no specific direction. So लिखि दबो it is a scalar quantity. Speed never give negative value. स्पीड केवल नेगेटिव ही नहीं हुई because distance is always positive. If we travel some distance, then distance is always positive. If we travel 2 meter distance, then travel 5 meter distance, then travel 7 meter distance, then distance always be positive. And if distance is always positive, so speed is always positive. If the distance is 0, then speed is 0. But distance never be negative, so speed also never be negative. So speed never be negative. So here are the types of speed. Type of is fast speed होचे uniform speed. तो firstly हमें speed रो प्रकार बुझवा पूर्वरु हमें जानना पड़बा what is the formula of speed. And speed is equal to distance upon time. Then in case of uniform speed, and how uniform speed is called? If a body moves a large distance, suppose from A point to B point, the body travels from A point to B point, which is a large distance, then every interval of time the body cover equal or unequal distance in their situation. So first हमें tabulation करना. First we draw a tabulation
of time and with respect to distance with respect to time. So suppose in 1 second the body cover a distance 2 meter. Another 1 second means 2 seconds. The body cover another distance 2 meter means 4 meter. Another 1 second, that means 3 seconds. The body cover another 2 meter distance, that means 6 meter. Another 1 second, that means 4 seconds. The body cover another 2 meter distance, means 8 meter. That means suppose this is 2 meter distance, this is 4 meter distance, this is 6 meter distance, this is 8 meter distance, and the body cover while the body moves from A to B point along a large distance, then the body cover 2 meter distance in 1 second, 4 meter distance in 2 seconds, 6 meter distance in 3 seconds, 8 meter distance in 4 seconds. So every point we find speed of the body. In this case also we find the speed of the body, distance upon time, then is 2 upon 1. In this case also we find the speed of the body 4, distance upon time, that is 4 upon 2. In this case also we find the speed of the body, distance upon time, that is 6 upon 3. So in every point the body acquires constant speed. When it moves a large distance, at every point the body acquires constant speed. And it is possible when the body covers equal interval of equal distance, when the body covers equal distance in equal interval of time. So speed is said to be uniform, or the speed of the body is said to be uniform if the body covers equal distance in equal interval of time. So that the speed of the body at any point, remains constant if it covers equal distance in equal interval of time. So in case of uniform speed, the definition can be write as the speed of a body is said to be uniform. The speed of the body is said to be uniform if it covers equal distance, if it covers equal distance in equal interval of time. এটা কেতবেলে পসিবল ফর এ ভেরিয়েবল স্পিড, আগে এটা লিখে দেব, ফর এ ভেরিয়েবল স্পিড which that the body moves along a large distance, then if it covers equal distance in equal interval of time, then the speed of the body is said to be uniform speed. And if we plot a graph between time and distance, তুমি নিজে আঁকতে भी পড়ব, মনে রাখবো যে 1 সেকেন্ড, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, and in this case 2 2 2 4 2 4 6 8, and we know that in this tabulation in 1 second the body covers 2 meter distance. This point in this the body covers 4 meter distance in 2 seconds. This 2 second 4 meter distance. The body covers 3 meter distance in 2 seconds. The body covers 6 meter distance in 3 seconds. Then finally the body covers 8 meter distance in 4 seconds. So in 4 seconds the body covers 8 meter distance. So if we draw a graph, distance time graph, in case of uniform speed, then it produces a straight line slope.
So star माने को लिखि दिबो जे in case of uniform speed distance time graph is produced straight line slope distance time graph with respect to time, how much distance covered by the body, that is called a speed. And in case of uniform speed, the distance time graph, if we plot a graph between distance time graph, then the graph is always produce straight line slope. This is uniform speed. And variable speed. So what is the meaning of variable speeds? So for a variable speed, the speed of a body is said to be variable. If it covers unequal distance. In equal interval of time. That means time equal रहिले भी जदि बॉडी रो डिस्टेंस कवर हेबाटा केन टाइम में देखो 2 मीटर तो केन टाइम में देखो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड बॉडी रो डिस्टेंस का होतिला यूनिफॉर्मली बॉडी चलुतिला अकॉर्डिंग टू दिस tabulation the distance traveled by the body increase with respect to time by 2 meter एठी भी 2 मीटर बोलला एठी भी 2 मीटर बोलला एठी भी 2 मीटर बोलला with equal interval of time. किंतु वेरिएबल स्पीड रे स्पीड पूरा वैल्यूटा सब पॉइंट रे अलग अलग रहबा. दैट मींस जदि 1 सेकंड जदि बॉडी 2 मीटर कवर करूची ले 2 सेकंड में बॉडी 5 मीटर कवर कला 3 सेकंड में बॉडी 8 मीटर कवर कला और 4 सेकंड में बॉडी 9 मीटर कवर. दैट मींस in this case the body cover unequal distance in equal interval of time. टाइम रो रेस्पेक्टेड बॉडी देखो 2 रो बॉडी में 3 बॉडी वाला 3 रो धरो 2 मीटर डिस्टेंस बढ़ेला तबे 2 मीटर रो धरो डायरेक्ट 4 मीटर डिस्टेंस बढ़ेला. दैट मींस डिस्टेंस जदि कवर होचे सेटा इक्वली कवर नहीं होबा. With respect to equal interval of time the body cannot cover equal distance. That means if we calculate the speed at every point of that body, the value of speed is different. That means here the speed is 2/1. In this case, speed is distance upon time. In this case, the speed is 5/2. In this case, the speed is 7/3. That means at any point the value of speed is variable. So this speed is said to be variable speed. And it is actually happens when the body covers unequal distance in equal interval of time. But in case of uniform speed, the body cover equal distance. Equal distance means 2 increase also in equal interval of time, so that the magnitude of speed at every point is constant. So in case of uniform speed रो magnitude सब जगह रे समान रहसी. But in case of variable speed रो magnitude सब जगह रे अलग रहबा because distance टा uniformly increase नहीं होगा. Distance टा uniformly increase नहीं होगा. So clearly बुझला. तो if the magnitude of speed is variable at every point, then the speed is said to be variable speed. And it actually happen when if the body cover unequal distances in equal interval of time. Time equally रहले भी जदि body unequal distance cover करूचे ले the magnitude of speed at every point changes or variable. So it is called as variable speed. So 1 second 2 meter हला 2 second रे 5 meter 3 second रे 7 meter 4 second में 11 meter. So if we plot a graph between distance and time in variable speed, then the graph is look like a curve. That means in 1 second 2 meter. In 2 seconds the body is 5 meter. 5 meter means center level. 2 seconds. So 3 seconds the body is 7 meter.
that means in case of 3 second this is 7 mojile roche, and 4 second the body is 11 meter. That means in case of 4 second the body is 11 meter. That means if we plot a graph, then it is look like curve. So in case of variable speed, ST distance time graph is produce curve. That means if you plot a graph between distance and time, then in case of variable speed it produce curve. But in case of uniform speed, as the body cover equal distance in equal interval of time, so it produce straight line curve. But in case of variable speed, the ST graph produce curve. So this is uniform speed and variable speed. Then now we discuss about average speed and instantaneous speed. So what is average speed? Average speed or a variable speed the average speed of a body is defined as the ratio between total distance covered by the body to total time. That means भवानी करना आवश्यक प्लस सब जगह तो स्पीड रो वैल्यू समान नहीं रहे, तो एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ स्पीड इज चेंजेस. तो सेते बेला में ताके कमा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एंड इफ द बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेते बेला में ताके कमा यूनिफॉर्म स्पीड. किंतु लार्ज डिस्टेंस वाला टाइम में बहुत बड़ा स्पीड आवश्यक फॉर वेरिएबल स्पीड, बहुत बड़ा स्पीड आवश्यक. तो से बहुत बड़ा स्पीड रो एवरेज हमें के हिसाब से बाहर करवा, बहुत बड़ा स्पीड रो एवरेज हमें के हिसाब से बाहर करवा जे बॉडी सपोज धरो बॉडी सपोज a body cover a distance x1 distance s1 in time t1, and that body cover distance s2 in time t2. Then what is the value of average speed? Average speed is equal to total distance upon total time. In this case, total distance in t1 time the body cover s1 distance, and in t2 time the body cover s2 distance. So total distance is s1 plus s2. In total time t1 plus t2. So this is the formula of average speed. ठीक আছে देखो एबे हमें देखमा इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो फर्स्ट हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड रो डेफिनेशन डिफाइन कर देबा तापर बुझमा. तो लिखाओ और ए variable speed, the speed
of a body at a particular instant of time or a particular point on path in which time interval is very small. It's called instantaneous speed. So देखो instantaneous speed आमी केते बेले calculate करना. This speed also calculate when a body moving along a large distance. That means variable speed. Then suppose the body moves from A to B for a long distance. Then if we want to calculate the speed of the body at this point, we know that the speed of the body at any point is different. But if we want to calculate the speed of the body at this point, then the time interval tends to 0. That means time interval is very small. तो जदि आमे बहुत दूर को जर्नी करूछु और जदि आमे गोटे रास्ता रे रही करी हठात आमे जदि हमर स्पीड केते अच्छे देखबा के चाहमा पहले हमर गाड़ी में स्पीडोमीटर अच्छे से स्पीडोमीटर स्पीड को डिटरमाइन करसी किंतु हठात आमे स्पीड को कैलकुलेट करबा के चाहमा पहले सेटा से स्पीड और ना ही कहजिबा इंस्टेंटेनियस स्पीड तमे सपोज you move from or travel from A to B point at any instant you want to calculate the speed at this point. So at any instant हठात तुम्हें डिसाइड करो हठात डिसाइड करो ये पॉइंट में स्पीड करबा के तो जेतो तुम्हें हठात डिसाइड करो सो टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल हठात तुम्हें डिसाइड करो सो टाइम इंटरवल स्मॉल रहले टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल दिस इज इंपोर्टेंट फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड टाइम इंटरवल स्मॉल रहला परे से स्पीड के हमें कहमा इंस्टेंटेनियस स्पीड बिकॉज़ हमें हठात कैलकुलेट करू छु जे कोन से पॉइंट सपोज दादा तुम ई पॉइंट में स्पीड केते अछि कैलकुलेट करबा अछि फाइंड द बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम A to B point suppose you want to calculate the speed at this point calculate the speed of the body at this point so in this case also time interval is very small हठात तुम डिसाइड कलो जे ई पॉइंट स्पीड केते हबा सो हठात जदि तुम गोटे पॉइंट स्पीड कैलकुलेट करबा के चाहछो बोले सेते बेले से स्पीड के कहजबा इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बहुत गुड़ा वेरिएबल स्पीड अच्छे किंतु तुम जे कौन सी पॉइंट जदि हठात स्पीड कैलकुलेट करबो से स्पीड के हमें कहि पारमा इंस्टेंटेनियस स्पीड जेने कि टाइम इंटरवल स्मॉल रहबा बिकॉज़ यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दैट बॉडी at any instant of time or suddenly you calculate the speed of the body so the time interval is very small and if the time interval is very small then the speed of the body is said to be instantaneous speed. We know that speed is equal to changing distance upon changing time but in case of instantaneous speed the time interval tends to 0 means हठात जब तुम कैलकुलेट करूछो means time interval is small रहबा और हठात जदी कैलकुलेट करूछो पूरे पॉइंट में जदी तुम स्पीड हठात कैलकुलेट करूछो सेते बेले ही हम ताकि कहमा इंस्टेंटेनियस स्पीड so we know that if the time interval is very small then the time is represented as dt अब टाइम जदी स्मॉल ही गला with respect to time distance also be small so this is the formula of instantaneous speed that means speed instantaneous is equal to ds upon
dc. This is the formula of instantaneous speed. So मन रखबो जे तुम लार्ज डिस्टेंस जाउछ तुम जदि जे कोनोसी पॉइंट रे जदि हठात स्पीड कैलकुलेट करबा अछि, सपोज एट दिस पॉइंट यू वांट टू कैलकुलेट द स्पीड, तो हठात कैलकुलेट करबा अछि मींस टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 और टाइम इंटरवल स्मॉल हेले बेले हम स्पीड को कहि परमा इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो डेफिनेशन लगा दे छे फॉर ए वेरिएबल स्पीड द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. पर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ने तुम कैलकुलेट करबो और ए पर्टिकुलर पॉइंट जे कोन से हठात गोटे पर्टिकुलर पॉइंट ने कैलकुलेट करबो जेने कि टाइम इंटरवल हठात कैलकुलेट करू मींस टाइम इंटरवल इज टेंड्स टू स्मॉल, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस स्पीड. एबा हम न्यूमेरिकल केला करमा देखो. न्यूमेरिकल केला देखो. First numerical, a railway train takes 8 hours to cover distance of 400 kilometer between two stations, between two station. What is the speed of train? What is the speed of train? This is a simple question. So first you solve this question, then first you write given data. So in case of in this question, given data is time is 8 hours, and when this railway train takes 8 hours, then it cover a distance of 400 kilometer to it cover a distance of 400 kilometer between two stations. इस गोटे स्टेशन रो आउटे स्टेशन को जीवा का जे ताको टाइम लागुची 8 आवर आउ डिस्टेंस कवर करूची 400 किलोमीटर. तो तुमके टाइम दे देछि, स्पीड दे देछि, डिस्टेंस दे देछि. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिफरेंस ओनली जे तमे जेते बेले आंसर लिखुछ तमे ट्राई करबो प्राय तो दैट आंसर इज इन एसआई यूनिट एसआई सिस्टम. सो आवर दीछे और फर्स्ट को सेकंड करमा 400 किलोमीटर दीछे ताके हमें मीटर करमा. तो हम डायरेक्टली करे चलबा. देखो 8 डिस्टेंस दीछे 400 किलोमीटर 400 बाय टाइम दीछे 8 आवर, किंतु किलोमीटर के मीटर करमा पहले मन रखबो 1000 मल्टीप्लिकेशन हवा. किलोमीटर के मीटर करमा पहले 1000 मल्टीप्लिकेशन हवा और आवर के सेकंड करमा पहले 300 3600 मल्टीप्लिकेशन हवा. सो 2 2 कटबा. सो मन रखिबो जदि किलोमीटर पर आवर देखो डिस्टेंस किलोमीटर टाइम आवर, तो जदि किलोमीटर पर आवर के इन ओरे फ्लो मन रखिबो जदि किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड करबो ले मल्टीप्लिकेशन करबो 5 बाय 18. मन रखिबो डायरेक्ट 5 बाय 18 मल्टीप्लिकेशन करबो. एठी तमे 1000 डिवाइडेड बाय 3600 जगह रे तो 5 बाय 18 दिके लिखि पाइती तो बिको दिके कटला करे 5 बाय 18 ही हेबा देखबो. सो किलोमीटर पर आवर को जदि तमे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करबा अछि तो 5 बाय 18 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करबो. बिकॉज़ 1000 बाय 3600 is 5 by 18. So finally speed will be
तमे बाहर को स्पीड जहां भी मारिबा द नेक्स्ट क्वेश्चन a railway train a railway train 200 meter long 200 meter long 200 meter in long 200 meter in long moves with a speed of moves with a speed of 72 km per hour 72 km per hour calculate the time taken by the train calculate the time taken by the train cross a bridge of 0.8 km long. This is an interesting question. So please focus this question. So question na koiche jodi one railway train ja length hochi given diche solution aga ame given dekhi dama length of train हमको दी diche 200 meter and it moves with the speed of the train दी diche speed of the train दी diche 72 km per hour but हमको कहिছে যে যদি কিলোমিটার पर आवर के যদি আমি কিলোমিটার पर आवर के যদি মিটার पर সেকেন্ড করমা মিন্স কিলোমিটার জায়গাতে 1000 आवर জায়গাতে 3600 ডিভাইডেড হবে তারপর হি मीटर पर सेकेंड आवर बिकॉज किलोमीटर इज 1000 मीटर आवर 1 आवर इज 3600 सेकेंड सो किलोमीटर पर आवर के जब मीटर पर सेकेंड करना मींस 1000 by 3600 हवा फाइनली 5 by 18 हवा सो किलोमीटर पर आवर के जदी मुई मीटर पर सेकेंड करबा अछि किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकेंड को केते मल्टीप्लाई हवा 5 by 18 5 by 18 मल्टीप्लाई हवा तो 5 by 18 मल्टीप्लाई होला परे तुम जहां भी आंसर आसबा देखबो 18 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कहै कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 0.8 किलोमीटर लॉन्ग तामने क्वेश्चन कहै जे हमें टाइम बाहर करमा व्हेन अबाउट द ट्रेन क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 0.8 किलोमीटर लॉन्ग तार माने सपोज दिस इज a bridge which have length 0.8 kilometer and how much time suppose this is a train and how much time taken by this train to cross this bridge that is asking your question so the whole part of the train is said to be cross the bridge when its last body is pass train ro last body ब्रिज के पास कला पड़े ये ट्रेन रो लास्ट बॉडी जदी ब्रिज के पास कला पड़े लास्ट बॉडी जदी ब्रिज के पास कला पड़े ही हमें कहि पारमा जे ट्रेन ता ई ब्रिज के दी करी पास करै छी मन रखलो दैट मींस टोटल डिस्टेंस से केते कवर करबा टाइम बार करबा चले टोटल डिस्टेंस केते कवर करबा ता माने एज द ट्रेन पास थ्रू द ब्रिज to the bridge it must be its last body must be cross the bridge तामाने जदी ट्रेन ता ब्रिज को पास करूची like it last body must be cross the bridge काजे फास्ट बॉडी जदी
ब्रिज ऊपर रहबा ले ट्रेन कंप्लीटली पास ही नहीं हबा किंतु ट्रेन रो लास्ट बॉडीटा जदी ब्रिज रु पळेबा बेले आमे कहि पारमा जे ट्रेन ता ही ब्रिज रु पळेला। तो फाइनली से ब्रिज के कवर करबा काजे टोटल डिस्टेंस से ब्रिज को कवर करबा पे टोटल डिस्टेंस केते कर ब्रिज रो डिस्टेंस एज वेल एज से ट्रेन पास कला पर ट्रेन रो डिस्टेंस एंड ट्रेन रो डिस्टेंस केते अछि ट्रेन रो लेंथ अछि 200 मीटर दैट मींस टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन by its pass through the bridge is 200 meter plus 0.8 kilometer। so एतकी ही क्लू बाबू माने एतकी के तमे भल कर मन रखबो। so total distance covered by train is equal to length of bridge and length of train because train रो लास्ट पार्ट ब्रिज के कवर कला पर हमें ट्रेन पूरा पूरी ब्रिज को कवर कला में कहि पारम दैट मींस टोटल डिस्टेंस ब्रिज को कवर कला समय रे ट्रेन केते अतिक्रम कला 0.8 किलोमीटर ब्रिज रो डिस्टेंस को अतिक्रम कला तार संगे संगे तार लेंथ भी तो पास हला तार लेंथ ट्रेन रो लेंथ भी पास हला ब्रिज रो। so total distance covered by the train is length of the bridge 0.8 plus length of the train, but this is expressed in kilometer, this is expressed in meter। तो 0.8 किलोमीटर को हमें मीटर करमा मीटर कले तो हम ही जिबा 800 मीटर plus 200 मीटर। तो लास्ट फाइनली तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन while it's pass through the bridge is so तमे जानिछो जे जेते बेले से ब्रिज के पास करू छे तार वेलोसिटी दीचे तमन 72 किलोमीटर पर आवर जाका में मीटर में कन्वर्ट कला परे 20 मीटर पर सेकंड हला। देन एबे बात करो जे हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन ट्रैवल while it's cross the bridge that means total length of the bridge as well as length of the train because the last part of the train cross over the bridge then we say that this train passed through the bridge that means total distance covered by the train is 0.8 kilometer plus 200 meter। that means हमें distance भी पाई गलु distance जेन distance द्वारा तमर ई ब्रिज को दिखरी ट्रेन ता पास करूचे से distance पाई गलो तमे distance s पाई गलो 1000। तो usually get time equal to we know that speed equal to distance upon time। so time equal to speed distance upon speed time equal to distance upon speed। so distance 1000 upon speed 20 that means time is 50 seconds। next finally our question then last question finally if distance is equal to 3t square 40 plus 9 something then find the speed of body in time 3 seconds। Then as this is a function s is equal to 3t square 40 plus 9 that means this speed is always instantaneous speed because we cannot use the direct formula of speed is equal to distance upon time we cannot use because this distance is given by t function so in this case we use differentiation that means speed equal to instantaneous speed equal to ds upon dt then d by dt of s kete diche 3t square plus 40 plus 9
then speed equal to 60 plus 4 and direct constant 0. That means speed equal to 60 plus 4 plus 0. किंतु लास्ट को तुम डिफरेंशिएट यूज करी तुम स्पीड बाहर कला परे डिफरेंशिएट यूज कला परे तुम स्पीड बाहर करबो स्पीड कला परे तुम लास्ट को जेते टाइम में तुम स्पीड बाहर कर बोलछि सेते टाइम पे पुट करबो t टाइम केते दिजे 3 सेकंड दैट इंप्लाइज स्पीड इज इक्वल टू 6 into t केते दिजे 3 plus 4 दैट मींस 22 मीटर पर सेकंड तुम निजे केतना क्वेश्चन करो किंतु टाइम दीचे ना बोले तो तुम डायरेक्ट टाइम की यूज कले भूल जीवा तमे ई टाइप रो जदी फंक्शन दीचे फंक्शन डिस्टेंस रो जदी फंक्शन हिसाब से दीचे तो तमे फास्ट ds/dt डिफरेंशिएट करी तो स्पीड रो वैल्यू बाहर करबो कला परे जहां टाइम दीचे आंसर बाहर करे टाइम जरा के वैल्यू चेक करबो।